if my screen is visible. Yes, sir. It is visible now. Perfect. Great. Yes, I have trained in students from IITs, IIMs, Delhi University, Symbiosis, and alike in resume building, profile building, LinkedIn optimization, job application strategy, etc. I'm also a regional mentor of change under Niti Aayog, which is an initiative under Atal Innovation Mission. Right? This is something about me, just to ensure that all of you understand कि जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो random नहीं है, that is coming out of experience. वो जो experience हमने किया है in the field of recruitment. I have worked in the field of recruitment. I still work with a lot of recruiters and I understand how this market works. And that is the experience that I'll be sharing with all of you. Right? Let's first understand. देखो, कुछ भी करने के पहले, किसी भी चीज को करने के सही तरीके को समझने के पहले हमें यह समझना पड़ता है कि गलत तरीके कौन कौन से, क्या करना है सीखने के पहले यह समझना पड़ता है क्या नहीं करना है. And that is why I'm starting with this slide where I will be listing down certain myths and telling you what are the realities there. ठीक है, सबसे पहले हम कुछ मिथ्स को समझेंगे. मिथ्स का मतलब क्या होता है? थिंग्स दैट आर नॉट ट्रू, दैट शुड नॉट बी फॉलोड. Okay, and be very careful when I am taking you through these myths. Myth number 1: a shorter resume or a longer resume is a better resume. When I guide students in campuses, IITs, B schools, generally some say, sir, हमें पता चला है कि छोटा रेज्यूमे ज्यादा बढ़िया होता है, हमें पता चला है कि एक ही पेज का रेज्यूमे बनाना है. कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर, रिक्रूटर्स को डिटेल्स चाहिए तो हमें लॉन्गर रेज्यूमे बनाना है. दैट इज अ मिथ. शॉर्टर और लॉन्गर रेज्यूमे इज अ मिथ. Reality is your resume is a marketing document. It has to be crisp and targeted. So crisp होना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है लिखने के लिए, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, फिर भी आप जबरदस्ती एक पेज का बना रहे. As a standard, a fresher's resume can be from 1 to 2 page. Can be from 1 to 2 page. Unless कि कंपनी ने स्पेसिफिकली बोला हो कि एक पेज में बनाना है या 2 पेज में बनाना है. Till that time, your resume can be from 1 to 2 page. Because as a fresher, you have academics to write, you have internships to write, you have projects to write. 1 to 2 pages is enough. But remember what I said, it is a marketing document. It has to be crisp and targeted. Myth number 2: there is a standard template for a resume. बहुत सारे लोगों को लगता है सर कोई स्टैंडर्ड टेम्पलेट है जिसको देख के कंपनीज हमें सिलेक्ट कर लेगी. रियलिटी ये है कि कोई स्टैंडर्ड टेम्पलेट नहीं है, कोई स्टैंडर्ड ड्राफ्ट नहीं है. कुछ रूल्स जरूर है और वो मैं आपको आगे इस सेशन में बताऊंगा. देयर आर सर्टेन रूल्स टू क्रिएट अ गुड रेज्यूमे. यू कैन पिक योर ओन टेम्पलेट, बट इफ यू फॉलो दोज रूल्स you will be likely to get shortlisted. Myth number 3. So first myth था short या long, कोई फर्क नहीं पड़ता. Standard template है क्या? नहीं है. Third, recruiters go through every resume. Myth है. अगर आप लोग नॉर्मल किसी जॉब का एप्लीकेशन नंबर देख लो आज लिंक्डइन पे या नौकरी पे या कहीं पे भी, यू विल फाइंड एवरेज एप्लीकेशंस फॉर अ जॉब दैट इज पोस्टेड yesterday आर इज 500. Something that is posted 3 days back is 1,000 applications, 5,000 applications. Up for any human eye, for any human recruiter, it is not practically possible to go through each and every resume. It is not practically possible. Only few resumes reach to that stage. Only few resumes. Which means that your first target should be to ensure that your resume reaches the recruiter. जब हम रेज्यूमे बनाते हैं तो ये सोच के बनाते हैं कि रिक्रूटर देखेगा तो कैसा लगेगा, बट वो देखेगा कि नहीं वो ही क्लियर करना, वो ही इंश्योर करना पहला टास्क है कि वो उस तक पहुंच जाए. राइट? सो रिक्रूटर्स डू नॉट गो थ्रू एवरी रेज्यूमे. इफ यू वर्क नाइसली एंड इफेक्टिवली ऑन योर रेज्यूमे, then it will ensure that it reaches the recruiter. Myth number 4: resumes are meant only to apply for jobs. ये गलती तो पता नहीं मैंने कितने लोगों को करते देख लिया. रेज्यूमे बनाने बैठेंगे ही तभी जब प्लेसमेंट का टाइम आ गया. रेज्यूमे बनाने बैठेंगे ही तभी जब जॉब चाहिए. दैट इज नॉट द राइट वे. रियलिटी इज resume can help you revisit your past experience, identify your improvement areas,
form the basis of your career decisions, and much more. At any point of time, you should keep updating your resume. It act as a profile statement. आप जब खुद रेज्यूमे पे बैठते हो तो आपको पता चलता है कौन सी स्किल्स है, कौन सी नहीं है, किस टाइप का एक्सपीरियंस आपने लिया हुआ है, किस टाइप का एक्सपीरियंस आपने नहीं लिया हुआ। तो आपको प्लेसमेंट के टाइम रेज्यूमे नहीं बनाना है, आपको रेज्यूमे रियल टाइम बना के रखना है। एंड व्हेन यू कीप ऑन अपस्किलिंग, डूइंग प्रोजेक्ट्स, उसको अपडेट करते रहना। दैट इज द फैक्ट। ना, ये मिथ सुन के अगर यहां पे कुछ बत्ती जली है, प्लीज टाइप बल्ब ऑन इन द चैट बॉक्स। टाइप बल्ब ऑन, टाइप बल्ब ऑन। अगर ये मिथ्स और रियलिटी सुन के समथिंग लाइटेंड अप हियर इन योर हेड, टाइप बल्ब ऑन। ग्रेट। वाई शुड वी बिल्ड द रेज्यूमे? अभी हमने डिस्कस किया वाई शुड वी बिल्ड द रेज्यूमे, है ना, सिर्फ प्लेसमेंट के टाइम नहीं। ऑफ कोर्स, टू गेट द नेक्स्ट जॉब, प्लेसमेंट हो रही है, जॉब शिफ्ट करना है, फर्स्ट जॉब लगाना है, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट पे जाना है। बट बियॉन्ड दैट, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिविजिट योर पास्ट एक्सपीरियंस। अरे यार, कल को आप किसी नेटवर्किंग इवेंट में हो, वहां पे आप मिल रहे हो, कॉलेज के किसी इवेंट में, ऑनलाइन वेबिनार में हो, किसी ने भी पूछ दिया व्हाट इज योर एक्सपर्टीज, व्हाट आर यू गुड एट। जमाना हो गया आपको रेज्यूमे बनाए हुए देखे हुए, आप बता ही नहीं पाओ। रेज्यूमे इज अ ग्रेट वे टू स्ट्रक्चर योर थॉट्स, and you will learn how to structure those thoughts to put in the resume. It's a very important document to identify your weakness. If you would not make a resume, you will keep on applying for random jobs. But if you have made a resume, तो जब आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करोगे, आपको पता रहेगा उस जॉब में जो चाहिए वो मेरे में है या नहीं है। रेज्यूमे में तो दिख नहीं रहा है। रेज्यूमे ऑल्सो हेल्प्स यू मेक राइट करियर डिसीजंस। आधे से ज्यादा लोग इस चीज के लिए कंफ्यूज रहते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे। जब कई बी स्कूल्स में, इंक्लूडिंग IIMs, IMT, सिम्बियोसिस, आई हैव टेकन गोल सेटिंग वर्कशॉप्स। गोल सेटिंग वर्कशॉप क्या होती है कि आपको अपने हिसाब से, आप आज जहां पे हो, आपको नेक्स्ट गोल क्या बनाना चाहिए, नेक्स्ट करियर गोल क्या होना चाहिए, कौन सी जॉब के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। पीपल आर ब्लैंक, स्टूडेंट्स आर ब्लैंक, इवन ग्रेजुएट्स आर ब्लैंक। व्हाट डू वी डू? वी आस्क देम टू मेक अ रेज्यूमे राइट देन एंड देयर। हम उन्हें बोलते हैं चलो रेज्यूमे बनाओ, लिखो क्या एक्सपीरियंस है, क्या स्किल सेट्स लिया है। वाइल दे आर राइटिंग देयर रेज्यूमे, दे रियलाइज ओके, आई एम गुड एट दिस, आई एम नॉट गुड एट दिस, आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस इन XYZ, I do not want to pursue ABC. And that is during, while they are making their resume, they realize, okay, I want to do job in this domain. मुझे इस जगह पे काम करना है। It also serves as a ready profile statement. Ready profile statement. Opportunities market में घूमती हैं। I have more than 300 vacancies sitting with me right now for freshers job, work experience job, 300 vacancies. अभी मैंने एक क्वेश्चन देखा था, बहुत ध्यान से आप लोग सुनना और नोट कर लेना इस स्टेटमेंट को। अभी एक क्वेश्चन मैंने चैट बॉक्स में देखा था कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मेकिंग अ रेज्यूमे इफ देयर आर नो जॉब्स इन द मार्केट। ठीक है, ये अभी किसी ने चैट बॉक्स पे डाला था। आई वॉन्ट यू टू बी ऑनेस्ट, I want you to be honest and tell me in the chat box how many of you believe that there are no jobs in the market. Type me in the chat box if you believe that there are no jobs in the market. Type me in the chat box. Everybody honestly who believes that there is no job in the market, type me. Satyam, I'm And sorry if to you, interrupting you, but your screen is not in presentation view. So is it okay? You're deliberately doing it, yeah, or yeah, you might yeah, have yeah. missed. Okay, thank you. सो अब जो मैं आपको बता रहा हूं, बिकॉज अब हम रेज्यूमे पे जाएंगे, बट उसके पहले आप लोगों का बिलीफ ठीक करना, अजम्पशन ठीक करना जरूरी है। एंड जस्ट फॉर दिस, फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स, आई विल बी अनशेयरिंग माई स्क्रीन। ओके, एज आई टोल्ड यू,
Just me. I'm not even a recruiter. I'm a career coach. At present, I have 300 plus job vacancies sitting with me. And let me tell you that I am struggling to fulfill those vacancies. Recruiters are behind me कि सत्यम सर प्लीज 10 डेवलपर्स दिला दो, 10 बिजनेस एनालिस्ट दिला दो, 10 ये दिला दो, 10 वो दिला दो, एंड आई एम स्ट्रगलिंग. I conduct workshop with students, freshers, and graduates on an everyday basis. They are asking for profiles. I am struggling to fill those profiles. Because आपको reality पता है, reality ये है कि इंडिया में दो टाइप के ग्रेजुएट्स हैं. और आप लोग बहुत ध्यान से सुन लेना, आगे आप लोगों को काम आ जाएगा. दो टाइप के ग्रेजुएट्स हैं. एक एक जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट लेके चल रहे हैं, दूसरा जो विक्टिम माइंडसेट लेके चल रहे हैं. प्रोग्रेसिव माइंडसेट, विक्टिम माइंडसेट. मैक्सिमम ग्रेजुएट से जब बात करें तो वो ये बिलीव करते हैं, उनसे बात करो ग्रेजुएट होने के बाद तो बोलेंगे अरे यार कॉलेज में कोई कंपनी नहीं आई प्लेस करने के लिए, जॉब्स ही नहीं है, इंडिया में तो रिसेशन चल रहा है, वर्ल्ड में स्लो डाउन चल रहा है, कहीं पे भी जॉब्स नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा है. कौन सा माइंडसेट है ये? चैट बॉक्स पे बताओ कौन सा माइंडसेट है, प्रोग्रेसिव या विक्टिम? कौन सा माइंडसेट है ये? वेरी गुड, वेरी गुड. प्रोग्रेसिव माइंडसेट किसका है आपको पता है? उन ग्रेजुएट्स का जो आप ही के अराउंड है, उन स्टूडेंट्स का जो आप ही के अराउंड घूम रहे हैं, आप ही की कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बट ऑलरेडी फर्स्ट सेकेंड ईयर. आई नो पीपल हु आर फ्रॉम टियर 2 3 टाउन्स. आप लोग की यूनिवर्सिटी तो भी काफी रेप्यूटेड है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो टियर 2 3 टाउन्स एवरेज यूनिवर्सिटीज में से पढ़ रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में है. दे हैव already started earning through part-time jobs, through freelancing, through full-time jobs. Before even they are passing out, they are ensuring कि उनके पास कंपनीज है प्लेस होने के लिए, चॉइसेस हैं, because they know the reality. And the reality is there is no dearth of jobs in the Indian market. There is no lack of jobs in the Indian market. The problem is not employment. The problem is employability. प्रॉब्लम एम्प्लॉयमेंट नहीं है, प्रॉब्लम एम्प्लॉयबिलिटी है. राइट? द रिक्रूटर्स आर लुकिंग फॉर राइट स्किल सेट्स एंड राइट एटीट्यूड. राइट स्किल सेट्स एंड राइट एटीट्यूड, ये दो चीजें हम दे नहीं पा रहे हैं रिक्रूटर्स को, और वेकेंसीज खाली पड़ी हुई. अगर आप प्रोग्रेसिव माइंडसेट के हो तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि कहीं पे जॉब्स नहीं है या मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा, यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन. क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा? व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या रिक्रूटर्स को जो स्किल्स चाहिए वो मुझ में नहीं है? सीख लो. रिक्रूटर को एक्सपीरियंस चाहिए, साथ में प्रोजेक्ट्स कर लो. देयर आर फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स अवेलेबल, देयर आर सेल्फ पेस्ड प्रोजेक्ट्स अवेलेबल इन वेबसाइट्स लाइक कॉर्सेरा, theforage.com, यूडमी. यूट्यूब पे फ्री के प्रोजेक्ट्स अवेलेबल. स्किल्स के साथ प्रोजेक्ट्स करके वो रेज्यूमे में दिखा दो. दैट इज हाउ यू बिल्ड अ रेज्यूमे. दैट इज हाउ यू एंश्योर कि रिक्रूटर को पता चले दैट यू आर स्किल्ड विद द राइट एटीट्यूड, विद इंप्लीमेंटेशन नॉलेज. दैट इज हाउ यू प्रिपेयर विद अ प्रोग्रेसिव माइंडसेट. कभी भी आपके माइंड में अगर ये बात आती है कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है एंड जॉब्स नहीं है, तो समझ जाना कि आपका माइंड आपको ट्रिक कर रहा है एंड यू आर गोइंग इनटू द विक्टिम माइंडसेट. इससे किसी का भला नहीं होगा, आपका तो बिल्कुल नहीं होगा. उसी समय अपने आप को याद दिला देना कि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है. प्रॉब्लम एम्प्लॉयमेंट की नहीं है, प्रॉब्लम एम्प्लॉयबिलिटी की है. देयर इज सम लैग. ईदर आई एम नॉट एबल टू लर्न द स्किल, और इफ आई हैव द स्किल आई एम नॉट एबल टू शोकेस इट प्रॉपरली. इन दो के अलावा तीसरी कोई प्रॉब्लम नहीं. या तो आप में स्किल नहीं है तो सीख लो, आसान है. अगर स्किल है तो आप दिखा नहीं पा रहे हो अच्छे से, आपने रेज्यूमे ढंग का नहीं बनाया, आपने लिंक्डइन प्रोफाइल ढंग की नहीं बनाई, यू आर नॉट प्रेजेंटिंग योर सेल्फ इन द राइट मैनर. इन दो के अलावा कोई तीसरी प्रॉब्लम नहीं है. देर इज नो वे दैट यू कैन नॉट गेट वर्क with so much work hovering around in the market.
But if you just want somebody to give you some work, some company to come to your college or to your home, that is not going to happen. वो तो नहीं होगा. Are you with me till now? Please type with you in the chat box. Please type with you in the chat box. If you understood what I said, type with you. If you are actually listening to this genuinely and honestly, I will give you all the ways to get into your next job. Don't worry. Whatever I can give you in this session, I'll give you in this session. For everything else, I'll give you ways to connect, right? And you can connect with me. I'll give you everything which is required to get into the next job that you want, but you will have to take action. करना आपको रहेगा. और उस माइंडसेट के साथ आप नहीं कर पाओगे कि जॉब नहीं है मार्केट में, रिसेशन चल रहा है, कंपनी सिलेक्ट नहीं करती. ऐसा कुछ भी नहीं है. लोग वर्क फ्रॉम होम जॉब्स कर करके पैसे कमा रहे हैं, रिमोट जॉब्स करके पैसे कमा रहे हैं, राइट? परफेक्ट. लेट मी रीशेयर माई स्क्रीन बिकॉज नाउ विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन. मैंने आपको बताया था कि योर रेज्यूमे इज अ पिच डॉक्यूमेंट, इज अ मार्केटिंग डॉक्यूमेंट. किसने किसने आप लोगों में से सेल्स या मार्केटिंग थोड़ी सी भी पढ़ी है या एक्सपीरियंस की है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स. सेल्स या मार्केटिंग. जब मार्केटिंग या सेल्स में हम कोई भी चीज को एडवर्टाइज करते हैं, हम कोई क्रिएटिव बनाते हैं या कोई एड बनाते हैं या वीडियो एड बनाते हैं, तो माइंड में क्या सबसे इंपॉर्टेंट रख के बनाते हैं? हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर माइंड व्हेन वी आर क्रिएटिंग एडवर्टाइजमेंट? टेल मी इन द चैट बॉक्स. सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? ओके, आई एम getting answers right from most of you. Customer, target consumer, customer audience. That is right. All the ads are made keeping customer in the mind. जब हम resume बनाते हैं, हमारा customer कौन है? Tell me in the chat box, who is our customer when we are building a resume? Who is our customer? Hiring manager, recruiter. Correct. And that is why, before going into the resume, it's important to understand the recruiter's mindset. And I'll be telling you three secrets to understand the recruiter's mindset. Right? I'm sharing the screen and I'm bringing the secrets to you. अगर आप लोग ये 3 secrets याद रख लेते हो, I mean, you will never make mistakes in a resume. 3 secrets to recruiter's mindset. Secret number 1. We are making a pitch document. What is a pitch document? Listen to me very carefully. Recruiters are not interested if you were a champion in your school. Recruiters are not interested if you have all the knowledge in the world. Recruiters are interested if you are highlighting those factors in which they are interested in. एवरी रिक्रूटर हायर्स टू फिल अ पर्टिकुलर गैप. रिक्रूटर्स हायर क्यों करते हैं? क्योंकि भाई कोई वैकेंसी है. वैकेंसी क्यों आई है? कोई नीड है, कोई काम है जो नहीं हो रहा है, किसी से करवाना है, तो वैकेंसी आई है. अब उस वैकेंसी में उस काम को करने के लिए जो स्किल्स लेकर आएगा उसी को पोजीशन मिलेगी. तो अगर आप दुनिया की सारी चीज हाईलाइट कर दो बट वो चीज हाईलाइट ना करो जो रिक्रूटर को देखनी है, तो आपका आपकी स्किल्स का कोई मतलब नहीं है, आपके रेज्यूमे का कोई मतलब नहीं है. तो आपको माइंड में ये चीज याद रख के बनाना है कि योर रेज्यूमे इज अ पिच डॉक्यूमेंट. यू आर पिचिंग फॉर समथिंग. यू आर पिचिंग फॉर समथिंग. अगर मैं किसी मोबाइल अगर कोई मोबाइल की एड बना रहा हूं और कस्टमर्स को स्ट्रॉन्ग मोबाइल चाहिए या लॉन्ग बैटरी बैकअप चाहिए, राइट? लॉन्ग बैटरी बैकअप चाहिए, स्ट्रॉन्ग मोबाइल चाहिए कि गिरे पड़े तो टूटे नहीं. लेकिन मैं एडवर्टाइज कर रहा हूं कैमरा को कि कैमरा बहुत अच्छा है इसका, तो बिकेगा क्या? यस और नो? एड में अगर मैं कैमरा को हाईलाइट कर रहा हूं तो बिकेगा क्या? और कस्टमर को चाहिए ड्यूरेबल, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग बैटरी, नहीं बिकेगा. एंड इसीलिए पिच डॉक्यूमेंट समझना जरूरी है. सीक्रेट नंबर 2.
ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कोई अचीवमेंट है बहुत अच्छी तो आप नहीं दिखाओगे, दिखाओगे। एड में ये लिखा रहेगा कि कैमरा बहुत अच्छा है, लेकिन नीचे लिखा रहेगा। ऊपर तो मैं हाईलाइट ये करूंगा ना कि इसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, ये गिरेगा तो टूटेगा नहीं। दैट इज व्हाट आई विल हाईलाइट बिकॉज कस्टमर वांट्स दैट। कैमरा बहुत अच्छा मेरे मोबाइल का, मैं वो भी हाईलाइट कर दूंगा, लेकिन नीचे थर्ड पॉइंट पे। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सीक्रेट दैट दिस रेज्यूमे हैज टू बी अ पिच डॉक्यूमेंट। सीक्रेट नंबर 2, कीवर्ड्स। मैंने आप लोगों को बताया कि हर रिक्रूटमेंट, हर वेकेंसी किसी नीड के बाद निकलती है। कोई प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रही है, कोई काम है जो नहीं हो रहा है, वो काम करवाना है। राइट, कोई स्किल्स है जो कंपनी में नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, उसके लिए किसी को हायर कर। ठीक है। अब वो प्रॉब्लम, वो स्किल सेट्स कहां लिखे रहते हैं? टेल मी इन द चैट बॉक्स। वो प्रॉब्लम या वो स्किल सेट्स कहां लिखे रहते हैं? वेयर विल यू फाइंड? ओके, संतोष इज राइट, विनय इज ऑल्सो राइट, धीरज इज ऑल्सो राइट, दिव्या पांडे, you all are right. The job description. In the job description, when you are applying for a job with your resume, your job description that you are applying for becomes your Bible, becomes the most important document. बिकॉज रिक्रूटर आके आपके कान में तो बताएगा नहीं कि हमें ये स्किल्स चाहिए। वो आपको आके ये तो बताएगा नहीं मुझे ऐसे एक्सपीरियंस वाले बंदे चाहिए जिन्होंने ये पढ़ रखा हो, ये प्रोजेक्ट्स कर रखे हो। वो ये लिखेगा, कहाँ लिखेगा? जॉब डिस्क्रिप्शन। तो अगर आप रेज्यूमे बना के अप्लाई कर रहे हो और आपने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा नहीं है, तो आप बेकार में मेहनत कर रहे हो। यू विल हैव टू स्टडी द जॉब डिस्क्रिप्शन, you will have to extract the keywords. What are the keywords? The relevant skills, the relevant tools, the relevant experience that they require. And you need to use these keywords in your resume. That is the second secret to recruiters' mindset. अगर आपने दो सीक्रेट फॉलो कर लिए ना जो मैंने आपको बताया, आप ऑलरेडी रिक्रूटर तक पहुंच जाओ। जो लोग अभी मैं बता रहा ना, रिक्रूटर्स के पास तो सारी सीवी पहुंचते नहीं, पूरे 1000 सीवी तो वो देखेगा नहीं। बट कौन से देखेगा? जो पिच डॉक्यूमेंट टाइप बने हैं और जिसमें कीवर्ड्स डले हुए हैं। जेडी के जो कीवर्ड्स है वो इसमें डले हुए हैं। डले हुए हैं मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ आता नहीं है फिर भी डाल दिया अपने रेज्यूमे में। जो चीजें आती है, जेडी में भी है, बट रेज्यूमे में नहीं है, उसको आप इंक्लूड करोगे। दैट इज वॉट यू विल डू। द थर्ड एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग सीक्रेट हियर इज रिजल्ट ओरिएंटेशन। मैंने देखा है 90% लोग जो मेरे सेशंस का पार्ट रहते हैं वो ये ऊपर के दो सीक्रेट तो फॉलो कर लेते हैं, थर्ड सीक्रेट पता नहीं भूल जाते हैं या टफ लगता है या क्या है, समझ नहीं आता हूं। रिजल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है समझना इस बात को, और बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि जब आप रेज्यूमे बनाओगे तो जो एक एक लाइन आप रेज्यूमे में लिखते हो वो इससे इंपैक्ट हो जाएगी। व्हाट इज रिजल्ट ओरिएंटेशन? लिसन टू मी वेरी केयरफुल। ऑप्शन नंबर ए, I worked for a social media management of a company called ABC Private Limited from April 1st to July 30th, 2024. I am writing about an internship. ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, वर्कड in social media management of ABC Private Limited, where I was able to increase their FB and Instagram traction by 30% from April to July 31st, 2024. ऑप्शन ए या बी, कौन सा बेटर है? Okay, I just saw one A and I see all the other B's. So, okay, now I see more A's. The right answer is option B. Now, a more interesting question. Why is option B correct?
or why is option B better? What is the reason? What is the reason? Yes, people who are writing achievements, result, and anything around that, you are right. Because in option B, you're showing the result. You're showing not just what you have done, you're showing what you have achieved, what you have accomplished. कंपनी को बेनिफिट क्या हुआ आपसे? अब आप रेज्यूमे में लिख रहे हो वर्कड ऑन एबीसी, हैंडल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्स वाई जेड, हैंडल दिस, हैंडल दैट. You are yourself showcasing that you are a person good for clerical jobs. But the moment you say that worked with a team of 4 to conduct the event, कॉलेज का ही बता रहे हो, मान कॉलेज की इवेंट की बात बता रहे हो, conducted the annual fest of college called, let's say, Varchasva, in April 2023, versus conducted or worked with a team of 10 to conduct the annual college fest, Varchasva, and ensured a footfall of 450 participants, which was 30% more than last year. क्या बेटर है, ए या बी? ए और बी? You are giving an impression to the recruiter that you are a person who cares for the result. Who cares for the result. And that is what recruiters want to see in your resume. That this person cares for the result. He is good in work, but he also understands कि उसके काम का नतीजा क्या निकला है. वो नतीजा कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि नंबर्स ही हो. It could be anything. Developed a software which helped the college accounting team to manage fees better. Anything. इसमें नंबर्स नहीं है, बट फिर भी पता तो चला ना कि किया क्या, उस सॉफ्टवेयर का हुआ क्या, किसको हेल्प हुई. That is result orientation. If in your resume, your profile summary, your internship experience, your work experience in college, your events, whatever you want to write, if you write most of them in the result oriented manner, I mean, your chances are really, really high that you will get shortlisted. These are 3 secrets to recruiters' mindset. Was it useful? Was it useful? Type useful in the chat box if this was useful to you. Type useful in the chat box if this was useful. Perfect. Enough of principles. Maybe if you want, you can take a screenshot. I'm sure you would have taken notes because that was the second rule. If you have not, then you might miss on important stuff. Take a screenshot of these 3 secrets because now we'll be moving to more of technicalities. कि resume में लिखते क्या क्या है, क्या क्या चीजें लिखेंगे, क्या क्या चीजें नहीं लिखेंगे, क्या क्या हेड्स होने चाहिए, कुछ सैंपल रेज्यूमेस भी देखेंगे, समझेंगे कि रेज्यूमेस कैसे बनते हैं. ओके, perfect. Let me move to the next slide. Crafting a clean resume. 4 points to be remembered. छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत ज्यादा इसको लर्न करने की नहीं, बिकॉज हम रेज्यूमे के सैंपल आप लोगों से शेयर करेंगे. कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग. यूज अ कंसिस्टेंट फॉन्ट टाइप एंड साइज थ्रू योर रेज्यूमे. कोई ग्रीन नहीं, रेड नहीं, पिंक नहीं, येलो नहीं चाहिए ही नहीं. कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग होगी. हेडलाइन थोड़ी सी बड़ी रहेगी, उसके नीचे बुलेट पॉइंट्स रहेंगे. ओके, कोई भी चीज पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं लिखोगे आप लोग कि कोई कहानी लिख रहे हैं तो 3-4 पैराग्राफ लिख रहे हैं. इट्स नॉट एन एसे, इट्स अ रेज्यूमे, इट्स अ पिच डॉक्यूमेंट, हैज टू बी क्रिस्प एंड रीडेबल. सो हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स, एंड ऑफ कोर्स प्रॉपर व्हाइट स्पेसेस एंड मार्जिन. साइड में व्हाइट स्पेस छूटेंगे, मार्जिन छूटेंगे. This is the structure of your resume if you are about to apply for jobs. You should have a name.
full in block letters. कैसे लिखना है क्या लिखना है, that also I'll share. You will have your contact details, which means your mobile number, email ID, your LinkedIn profile, and if you have a professional website, Insta, Twitter account, then only that. Otherwise, not required. But mobile, email, and LinkedIn profile you must mention. इससे ये भी पता चलता है जिनके क्वेश्चंस आते हैं, शुड आई इंक्लूड अ फोटो, अ पिक्चर? द आंसर इज नो, अनलेस द कंपनी आस्क फॉर इट. There is no need for you to put your photograph in your resume unless the company asks for it. कंपनी बोल रही है डाल दो तो डाल दो, पर अगर नहीं, सिर्फ रेज्यूमे मांगा है तो प्लीज सिर्फ रेज्यूमे भेजो, पिक्चर की नीड नहीं है. कॉन्टैक्ट डिटेल्स में पीपल आर सेइंग एड्रेस लिखना है क्या अपना? क्यों लिखना है एड्रेस? कंपनी थोड़ी आपके घर आएगी, ना ही वो कोई कोरियर भेजेगी. भाई मेल्स करेंगे, जो भी आपका रिजल्ट है एप्लीकेशन इंटरव्यू का, दे विल सेंड यू अ मेल. So there is no need for you to write your address. Not required. Mobile number, email, LinkedIn profile. That's it. Then comes career objective or professional title. I repeat, career objective and professional title. What is career objective? For freshers who have not worked or worked for, let's say, 1 year or so, they write their career objective. What is career objective? Enthusiastic digital marketer, enthusiastic web developer, skilled in XYZ. I hope you're taking notes. Enthusiastic web developer, skilled in XYZ, looking for challenging roles in ABC industry. Right? आप अपनी प्रोफाइल पहले मेंशन करोगे. व्हाट डू यू स्टैंड फॉर? आर यू अ मार्केटर? आर यू अ डेवलपर? आर यू अ फाइनेंस एक्सपर्ट? आर यू अ वेल्थ मैनेजर? आर यू एन ऑडिटर? हुएवर यू आर, video editor, graphic designer, write that with the skills that you have. You can also write have an experience of working on projects like ABC. So your profile, your skills, your experience, and where do you want to work broadly. किस इंडस्ट्री में, किस डोमेन में काम करना चाहते हो. अब बोलोगे सर ये तो पता ही नहीं है, तो इसलिए तो फिर सिलेक्शन नहीं हो रहा, इसलिए ऐसा लगता है कि जॉब्स नहीं है मार्केट में, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपको कहाँ पिच करना है. You should be very clear of who you are, where you want to pitch. That is career objective. Professional title for people who have 5+ years of experience. They can write about their experiences as well. They generally write seasoned marketer, seasoned digital marketer with skills in, skilled in XYZ skill sets and experienced in projects around ABC, looking for challenging role in this industry, this domain. Same. Assuming that most of people here are freshers or 1, 2, 3 years of experience, the next thing that you would write is your projects and experience. Everything that you have done as internships, as freelancing, as self-paced projects, खुद ही बैठ के कुछ एनालिसिस किया है, खुद ही बैठ के कुछ डेवलपमेंट की है, खुद ही बैठ के कोई टूल बिल्ड किया है, write that in project and experience. Write that in projects and experience. And there is a way to write that. Heading, subheading, heading, subheading. And we'll see how it is written. We'll check in the sample resumes. Then skill sets. What are skill sets? Core skills and soft skills. What are core skills? All the technical skills that you have, all the tool knowledge that you have, whether it is MS Office Suite or Google Suite or Power BI, Tableau, or the knowledge of, let's say, Chat GPT or Gemini, or it could be Adobe, whatever technical knowledge you have, that is skills. Plus communication, public speaking, interpersonal skills, whatever you want to mention, you mention those. Then comes your awards and achievements, then comes your education. If you are applying through from your college directly, education can also come at the top. Both is fine. At the last or at the top, both are fine. If company is coming to your college, education can be mentioned at the top. You can take a screenshot of this page so that when you prepare the resume, you have an idea on how to do it. Type done if you have taken the screenshot.
Great. So now we have, before we review the resumes, now we have understood what points to be covered in the resume. So there are some important points to remember. Till the time you are a fresher, keep it to 1 to 2 page, right? 1 to 2 page. Only if you are undergraduate, if you have just an undergraduate, then you can keep it to 1 page. कि आपने सिर्फ अंडर ग्रेजुएशन किया उसके अलावा कुछ नहीं किया, then it could be 1 page, otherwise it could be up to 2 page. Always proofread before forwarding. पहले तो हमें खुद से प्रूफ रीड करना पड़ता था, अब तो इतने सारे टूल्स आ गए, गूगल के एक्सटेंशन आ गए, सिंपल सा क्या है, जो स्पेल चेक का गूगल का टूल है, यू कैन जस्ट, फ्री टूल है, रेज्यूमे डालो, कोई स्पेल चेक है, ठीक कर लो. डू नॉट पुट रॉन्ग स्पेलिंग्स इन योर रेज्यूमे, इट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन. Grammatical errors give a very bad impression. Never ever lie. Anybody who thinks that you can lie in your resume, let me tell you that recruiters are smartest of the lot. आप अगर झूठ बोलोगे तो जो बेस्ट आपके साथ होगा वो ये होगा कि वो रिजेक्ट कर देंगे रेज्यूम. अदरवाइज हमने ये भी देखा है कि वो रिजेक्ट करते हैं, डिबार कर देते हैं. डिबार इन द सेंस, sometimes they block it and they block them for applying to any company in the industry for next 3 years. Never ever lie in your resume. प्रेजेंट करना अलग बात होती है, ओवर सेल करना भी ठीक है, कि हमने जो चीज की है उसको हम बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, वो भी ठीक है, बट कुछ किया ही नहीं है और लिख रहे हैं, वेरी रिस्की. डू नॉट डू दैट. एंड मेंटेन अ लाइव करियर डॉक्यूमेंट. ऑलवेज मेंटेन अ लाइव करियर डॉक्यूमेंट. व्हाट इज अ लाइव करियर डॉक्यूमेंट? अ रेज्यूमे विच यू कीप ऑन अपडेटिंग. ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट के टाइम से बनाओ, बना के रखोगे, उसको अपडेट करते रहो. दैट इज वॉट यू विल डू. नाउ सारा रेज्यूमे बना लिया, देख लिया, सारे पॉइंट्स फॉलो कर लिए, रिजल्ट ओरिएंटेशन दिखा दिया, बिल्कुल पिचिंग में बनाया, कीवर्ड्स निकाल लिए जेडी से, स्टिल शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ. इसलिए शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ क्योंकि हमें पता ही मशीन शॉर्टलिस्ट कर रही है. बिकॉज 1000, 2000, 1500 एप्लीकेंट्स हैं. डायरेक्ट get shortlisted, get screened, and then reach the recruiter. What is that tool? Who can tell me? What is that tool? What is that tool that recruiters use to screen the resume before it reaches them? Okay, that's good. Most of you know about that tool. It's called ATS. It's application tracking software or application tracking system. It's a recruiter के पहले ATS हमारा कस्टमर है. When we are preparing a resume before the recruiter, ATS becomes our customer. So अब ATS के बारे में जानना भी जरूरी है कि भाई ATS को क्या पसंद है, ATS को क्या पसंद नहीं है, क्या चीजें करेंगे रेज्यूमे में तो ATS शॉर्टलिस्ट कर लेगा. Right? Do you want to know about ATS? What does it like, what it doesn't like? Yes or no? Do you want to know about ATS? Let's see. What is ATS? ATS is a software application that streamlines and automates recruitment process for employees. इतने सारे एप्लीकेंट्स आ रहे हैं, ओवरवेलमिंग फ्लक्स हो गया, एक जॉब डाली, 1000 एप्लीकेशंस आ गए. क्या करें? इट एक्ट्स एज अ गेट कीपर कि भाई रुक जाओ, सारे रेज्यूमे नहीं जाएंगे अंदर, कुछ रेज्यूमेज जाएंगे. वो कौन से रेज्यूमेज जाएंगे वो समझते हैं. It works on 3 very critical elements. It scans your resume on 3 very critical elements: keywords, phrases and formatting elements. अब बहुत ध्यान से सुनना. कीवर्ड्स, फ्रेजेस एंड फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स. अगर ये तीनों चीजें आपकी सही है तो वो आपको एक स्कोर असाइन करेगा. इट्स कॉल्ड अ रेलेवेंस स्कोर.
वो रेलेवेंस स्कोर की एक बेंचमार्क होगी, एक डेडलाइन होगी, जैसे कि हमारी एंट्रेंस एग्जाम की होती है। तो जो 1000 रेज्यूमेस अंदर आए सबकी स्कोरिंग होगी, एंड उस स्कोर के हिसाब से रेज्यूमेस अंदर एचआर के पास जाएंगे, मशीन से निकल के एचआर के पास शॉर्टलिस्ट होके जाएंगे। विच मीन्स कि अगर आप एक परफेक्ट फिट फॉर द जॉब भी हो, आपके पास सारी स्किल सेट्स है, सब कुछ है, बट आपने एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे नहीं बनाया है, तो आप रिजेक्ट हो सकते हो क्या, हो ही जाओ। एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बनाते कैसे हैं, राइट, समझते हैं। नंबर वन, जितने कीवर्ड्स हैं, चलो कीवर्ड्स के पहले हम समझ लेते हैं दिस, कि एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बनाएंगे कैसे। दिस इज द एटीएस फ्रेंडली चेकलिस्ट। मैं थोड़ा सा इसको आपको समझाऊंगा, बट आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट इट बिकम्स हेल्पफुल टू यू ऑल। स्क्रीनशॉट आप ले लो। एटीएस की स्कोरिंग कैसे होगी? सिंपल फॉर्मेटिंग, कोई फोटो नहीं, कोई चार्ट नहीं, कोई बार नहीं, कोई ग्राफ नहीं, कुछ नहीं चाहिए। टेक्स्ट फॉर्मेट का रेज्यूमे होगा, हेडिंग्स होगी, बुलेट पॉइंट्स होंगे, कोई हेडर फुटर नहीं होगा, राइट। फाइल फॉर्मेट या तो वर्ड होगा या पीडीएफ होगा, तीसरा कोई फाइल फॉर्मेट चलता नहीं है एटीएस में, या तो पीडीएफ या वर्ड, प्रिफरेबली पीडीएफ। अनलेस कंपनी बोल रही है वर्ड फाइल, आप पीडीएफ फाइल ही बनाओ। अवॉइड इमेजेस एंड ग्राफिक्स। कुछ अलग अलग स्टार बना रहे हैं, इमेज बना दे रहे हैं अपनी पिक्चर, इसलिए मैंने पिक्चर मना किया। इट कैन मेस अप विद द एटीएस, इट कैन वेरी इजीली मेस अप विद द एटीएस। दैट इज वाई यू शुड नॉट पुट योर पिक्चर्स। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। उसकी स्कोरिंग होती है, एटीएस में स्कोरिंग फीड होती है, अगर इतने कीवर्ड्स डले हैं तो इतना स्कोर आएगा। हर कीवर्ड का एक स्कोर है। तो ये सारे पॉइंट्स तो फॉर्मेटिंग के हो गए। ये वाला जो पॉइंट हो गया वो है स्पेल आउट एक्रोनिम्स, बीबीए और लेट्स से एमबीए, और कोई भी यूएनओ, शॉर्ट फॉर्म्स एटीएस के साथ मैसअप कर सकते हैं। तो उससे मच बेटर है कि आप शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखो, फुल फॉर्म लिखो। एसईओ, उससे अच्छा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लिखो। यू डोंट नो कि जेडी में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है जो एटीएस में फेड है, राइट, फुल फॉर्म्स। सो फॉर्मेटिंग, full forms and keyword optimization. I am repeating the question. Where do you find the keywords? कहां मिलेंगे कीवर्ड्स? कहां मिलेंगे कीवर्ड्स बताओ? जेडी में मिलेंगे। विच मीन्स कि कोई स्टैंडर्ड रेज्यूमे नहीं यूज होगा सारी जॉब्स के लिए अप्लाई करने में। जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, फॉर्मेटिंग तो सबकी एटीएस फ्रेंडली रहेगी, बट देन कीवर्ड्स आप उस जॉब डिस्क्रिप्शन में से निकालोगे और अपने रेज्यूमे में डालोगे। दैट इज वॉट यू विल डू, दैट इज वॉट यू विल डू। ओके, time for some interesting thing. Do you want me to show you some resumes? Yes, no, yes, yes. तो अब हम क्या करेंगे, मैं दो रेज्यूमेस आपको दिखाऊंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो परफेक्ट है, बट हम उनको रिव्यू करेंगे साथ में। ओके, हम रेज्यूमे देखेंगे, रिव्यू करेंगे, मैं आपसे पूछूंगा कि क्या गलती है क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद वी विल गो टू क्यूएनए, क्वेश्चन एंड आंसर्स, और उसके बाद कुछ और रेज्यूमेस रिव्यू करेंगे, ठीक है। सो रिव्यू, then we'll go to Q&A so that we can take up your questions, and then we go to reviewing more resumes. Is that fine with you? Type ready in the chat box. If you're ready, type ready in the chat box. Great. Let me share my screen again. Okay. Arpit, can we see the resume on screen? Yes, Just sir. Yes, confirm sir. me. It is visible. Okay. Okay. So we see the resume of Vikram Agarwal, who is trying to apply as a Scrum Master. He's written professional summary,
Certified Scrum Master with over 7 years of experience in planning. So he has written what he is, who he is, written his experience, skill sets. Perfect. Then he has written key skills. Agile, Scrum strategies. You see simple ATS friendly format, no picture, name, email, contact number. Okay, एक एक करके चलते. Is there anything missing in the contact details? Type in the chat box. Is there anything missing from the contact details? LinkedIn, very good. Everybody who's saying LinkedIn profile link, good. Professional summary, fair enough. Key skills, good, because he has written soft skills as well as core skills. So C has written IT skills, cloud-based, Jira, software, all these are tech skills. Stakeholder management, strategic planning, coaching, soft skills. अब ये मत बोलना कि फ्रेशर का रेज्यूमे या वर्क एक्सपीरियंस का रेज्यूमे. अज्यूम कर लो कि ये फ्रेशर का रेज्यूमे है एंड ये इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है. What does he write? He writes what he was doing. Then he writes company's name. Here he writes date. And then he writes bullet points. Optimizing and facilitating daily stand-up, sprint planning meetings, sprint review, etc. Right? Guiding and coaching the team to be self-organized and keeping management team updated with team's progress and effectiveness. Ensuring effective implementation of XYZ. Right? This is what he has written. So bullet points, headings, bullet points, heading, subheading, bullet points. Then he has written certifications and then he has written education. This is one resume. Okay, let's move to one more resume. 1 second. Here is the resume of Ankit Kumar. Okay, name fine. Contact details also fine. Email. Okay, is this required? Is this required? Yes or no? Not required. Now he starts with training. Okay, no issue. He wants to start with training. So he has written all the trainings that he has done because he's a fresher. See, he's a fresher. I repeat, he's a fresher, but he has still written projects. So training, projects, education. Fair enough. Skill sets. Is there anything wrong here? The way he has written skills, is there anything wrong here? What is wrong here? The way he has written skills. Boxes does not work well with ATS. ATS might reject this. ATS might reject this. Right? Achievements, good. But information references not required unless they ask. Not required in the resume. Birth date, passport, not required. A much better way would have been he should have started with profile summary or career objective. A good career objective here, projects below that, and then trainings, then skill sets in bullet points, then achievements, and then education, or education and then achievement. So same content in a much better way he could have written. So I'm happy to see that you are analyzing and reviewing it better. We have more resumes to review, and we also have a few inputs on cover letter, which we will go through. But before that, let's take a moment so that you are also sorted, and let's take up a few questions if you have. What we can do is you can raise your hand, and whoever has a question, they will raise their hands. We will take up a few questions at the start. We'll allow you to talk. You can ask your question verbally, and then we can take it up. Arpit, over to you for questions. Sure, sir.
Okay, I have noted down a couple of questions which was asked previously when you were delivering. Somebody has asked that how to manage the career gap on a resume. Wow. So, good question. Very interesting question. First, you will have to understand again the recruiter. I have talked to a lot of recruiters. Career gap, it's not like they do not want to hire people with career gaps. What they think is because of the career gap, the candidate would have gone redundant. कि भाई नए ट्रेंड्स नहीं पता होंगे, नए टूल्स नहीं पता होंगी, नई टेक्नोलॉजी नहीं पता होगी, रिडंडेंट हो गए होंगे, इसलिए उनको नहीं हायर करते, जो इंडस्ट्री में उसी को हायर कर लेते हैं, राइट? इफ यू कैन एंश्योर कि करियर गैप के बाद इमीडिएटली अप्लाई करने के बदले, इफ यू एनालाइज द जॉब रोल्स दैट यू वांट टू अप्लाई फॉर, आइडेंटिफाई द स्किल गैप, कुछ तो स्किल गैप आया होगा, 3 साल से आप बाहर हो या 2 साल से करियर गैप है, 1 साल से है, तो जो स्किल गैप आया है पहले तो आप वो स्किल लर्न कर, उसको लर्न करने के बाद देर आर मेनी सेल्फ पेस्ड प्रोजेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बिजनेस एनालिसिस लर्न किया है तो पावर बीआई टैब्ल्यू यूज करके प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। अगर आपने कोई कोडिंग सीखी है तो आप सेल्फ पेस्ड कुछ टूल बिल्ड कर सकते हो। फाइनेंशियल एनालिटिक्स सीखा है, 3-4 कंपनीज का एनालिसिस कर सकते हो, डू अ प्रोजेक्ट। इफ यू कुड डू इट विद अ कंपनी, स्टार्टअप, अ फ्रेंड, ग्रेट। नहीं मिल रहा है, खुद से कर लो, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स कर लो, मेंशन दोज ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स इन योर रेज्यूम। तो जैसे जब आपका रेज्यूमे रिक्रूटर को जाएगा तो लेटेस्ट चीज करियर गैप नहीं होनी चाहिए। द मोस्ट रिसेंट थिंग शुड नॉट बी करियर गैप, द मोस्ट रिसेंट थिंग वुड बी शुड बी अपस्किलिंग इन प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव डन, that gives a flair to the recruiter. Okay, she is already or he is already back to the industry, right? They are already back to the industry, and that is where you get a better chance. आपके पास फायदा है because you are immediately available for joining. A person who is in the industry is not immediately available for joining. 3 month का notice period, 2 month का notice period. तो अगर आपने justify कर लिया अच्छे से कि you are already back, you are already learning, you are already implementing projects, it's much better. दूसरी चीज है कि जो आपका करियर गैप है उस टाइम आपने क्या सीखा है, आपने क्या लर्निंग ली है, was it because of marriage, maternity, was it because of health reason, was it, तो उस समय आपने क्या सीखा है, इन द इंटरव्यूज यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई दैट, दैट वाज नॉट कि आप खाली बैठे थे, you will upskilling, learning and doing a lot of things. Correct, so thank you. There was one more question that student have asked that how do we become clear about what kind of jobs do I stand in? Okay, 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 goal setting से related है, Yes, sir. but then yes, how do you be clear? See, दो बड़े फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि आप किस करियर में सक्सेसफुल होंगे। एक है व्हाट डू यू एंजॉय डूइंग, सेकंड है व्हाट यू आर गुड एट। तो अगर आप अपना पास्ट और प्रेजेंट अगर एनालाइज करते हैं, जो भी किया आपने कॉलेज में, स्कूल में, प्रोजेक्ट्स के टाइम, कॉलेज के इवेंट्स के टाइम, इफ देर इज समथिंग दैट यू एंजॉय, इफ देर इज लर्निंग समथिंग दैट यू एंजॉय, प्लस यू आर ऑल्सो गुड एट इट, देन यू कैन परस्यू दैट स्पेसिफिक फील्ड, राइट? फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग सिर्फ जो चीज इंजॉय करते हैं उसमें करियर बनाएंगे बोल के निकलते हैं। अब वो निकलते तो हैं लेकिन उसमें वो अच्छे से अच्छा कर नहीं पाते हैं, देयर देयर स्ट्रेंथ डज नॉट लाई देयर। So it's very important to check the strength factor as well, right? You can Correct. pick domains, you can pick industries just on the basis of ticking कि यार ये this is something that I like doing as well, right? अपना past पूरा experience list down करो, you will find ways in which you can decide which career to opt. Correct, sir. Correct. One of the student has asked that whether it is good to use tables to represent some data on the resume. Unless it is a format that is recommended by college or company, then no. Okay. अगर कॉलेज या कंपनी ने वो फॉर्मेट दिया है तो आप लिखो टेबल्स, अदरवाइज डो नॉट टेक अ रिस्क। मैंने आपको बता दिया एटीएस प्रिफर सिंपल फॉर्मेटिंग, तो जितना ज्यादा पॉइंटर्स, बुलेट पॉइंटर्स, हेडिंग, सब हेडिंग, बुलेट पॉइंटर्स, ये फॉर्मेट फॉलो करोगे उतना बेटर है आपके लिए। Okay. Okay. Somebody has asked, sir, that how to present a language which somebody might be learning on a resume. So language would be, now I'm not sure whether he's talking about a technical language Yeah, or a language that language. was not asked if the technical language or Okay. some foreign language. अच्छा, दोनों का आंसर कर लेते हैं। अगर जी आप जी फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं, सपोज यू नो फ्रेंच और यू नो लेट्स से स्पेनिश, देन एडिशनल इंफॉर्मेशन जो नीचे हम लिखते हैं ना एजुकेशन के बाद, वहां पे आप मेंशन कर सकते हैं दैट वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, हिंदी एंड
स्पेनिश फॉर एग्जाम्पल। और अगर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो वो तो स्किल है, वो तो ऊपर स्किल सेट्स में आएगी। Correct, sir. And next question was, how much of the personal information can be shared on the resume, like sharing the name of parents or other things like that? So how नॉट much एट of ऑल रिक्वायर्ड। not required, right? नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। आई मीन रिक्रूटर को क्यों चाहिए होगा, आप सोचो ना, आप उसके लिए बना रहे हो एक एक पेज जो आप खराब कर रहे हो, वो उसका डिस्ट्रैक्शन है रिक्रूटर का। सीधा उसको वो दिखना चाहिए जो उसके काम का है। Correct, sir. And what are effective methods do you suggest to get projects? सो एक हायरार्की है प्रोजेक्ट्स करने की। सबसे पहली हायरार्की होती है सेल्फ पेस्ड प्रोजेक्ट्स। सो एज सिंपल एज वॉट एवर प्रोजेक्ट इन वॉट एवर डोमेन यू वांट टू डू प्रोजेक्ट्स, इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू डू अ प्रोजेक्ट इन लेट्स से डेटा एनालिटिक्स, I will type free projects in data analytics. There will be experts on YouTube who would be training through projects on data analytics. Same goes for coding, same goes for AI, generative, everything. That is the first layer. You do a project for free with a YouTube expert, then you go one level up. There are websites like Coursera that offer guided projects for free. They are a little more advanced, right? Then you do those guided projects in the same domain. Now you have two projects. One is basic from YouTube, one is on Coursera. देन यू हैव सिम्युलेशंस। सिम्युलेशंस का मतलब क्या होता है कि देर आर दीज आर प्रोजेक्ट्स फ्रॉम कंपनीज ओनली, फ्रॉम एक्सेंचर, इन्फोसिस, दीज बिग कंपनीज, बट दे आर ऑफर्ड एज सिम्युलेशंस। यू आर नॉट डायरेक्टली वर्किंग विद द कंपनी, बट जो कंपनीज ने पास्ट प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं उन्हीं को वो फ्लोट करके आपको सेम प्रोजेक्ट्स करने बोलती है। देर इज अ Correct. वेबसाइट कॉल्ड द फोराज डॉट कॉम, द Got it. फोराज, right? forage.com, forage.com. When you go to that site, simulation से वहां पे आप वो projects कर लो। Now when you have these things on your resume and then you apply, then the recruiters feel okay, you already have implementable knowledge, and then they would be interested in giving you projects. The problem is candidates directly apply to the recruiters with nothing on their resume, so that's why they are not able to get good projects. Correct, sir. So on the same line, there was one more question I was able to find out. How could I grab a job as data scientist or data analyst if I have all the knowledge after second semester of the course? ओके, गुड इनफ। सो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको बता दूं कि पॉसिबिलिटी है। आई नो पीपल हु आर वर्किंग एज डेटा एनालिस्ट, आई एम नॉट सीन एज डेटा साइंटिस्ट बिकॉज डेटा साइंटिस्ट के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा Correct. रिक्वायर्ड रहता है। बट डेटा एनालिस्ट के लिए लोग हैं जो सेकेंड ईयर से ज्वाइन कर चुके हैं, पार्ट टाइम थर्ड ईयर से ज्वाइन कर चुके हैं। तो करना आपको यह सिंपल कि आई हैव इनफ नॉलेज, ये फाइनलाइज करने के पहले लुक एट डेटा एनालिस्ट जॉब। गो टू लिंक्डइन, गो टू नौकरी, सर्च फॉर डेटा एनालिस्ट जॉब with 2 years, 1 years of experience or fresher data analyst job, and analyze the job descriptions. When you analyze the job description, you will know the list of skill sets that is required. I am 100% sure कि वो सारी skill sets तो आपके पास नहीं होंगे। मे बी 60% देयर, मे बी 70% देयर। जो वो 30% बच्चा है वो भी Correct, लर्न sir. देम। और जो मैंने आपको प्रोजेक्ट्स के लेयर्स बताया है, डोंट वेट फॉर कि मुझे कोई जॉब देगा तभी मैं करूंगा। यू स्टार्ट डूइंग प्रोजेक्ट्स थ्रू कॉर्सेरा, थ्रू forage.com, सिमुलेशन से आप कर लो, उसको भी रेज्यूमे में डाल दो। कहां पे डालोगे? प्रोजेक्ट एंड एक्सपीरियंस के नीचे। सो नाउ व्हेन यू आर अप्लाइंग टू द रिक्रूटर, एट द फेस ऑफ इट, इट डज नॉट सीम दैट यू आर अ फ्रेशर। इट्स ऑन योर resume there are projects that are mentioned, your chances of getting shortlisted would be higher. Correct, sir. So there is a very interesting question I was able to find. Somebody has written that suppose I'm working on a particular domain and I want to shift my career to some other domain, then what kind of things I should take care in my resume? Yes. Interesting question Yeah. again. So after career gap, domain shift is the second biggest problem possibly for people, for candidates. So what happens? Let's say you have worked for 3 years in a particular domain, right? Now you want to shift to a different domain. अब इसमें दो रिस्क आते हैं। एक रिस्क तो ये आता है कि जो नया डोमेन है उससे रिलेटेड स्किल्स हमारे पास है या नहीं। दूसरा रिस्क आता है कि पुराना 3 4 5 साल का जो एक्सपीरियंस है वो जीरो हो जाएगा और अब एज फ्रेशर नई जॉब मिलेगी। ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दोनों प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है मैं आपको बताता हूँ। पहली प्रॉब्लम तो सिंपल लर्निंग से सॉल्व। आपको डोमेन शिफ्ट करना है, तो जो नए डोमेन में आपको जाना है उसके लिए क्या स्किल सेट्स रिक्वायर्ड है, जाने के पहले सीख लो, सो दैट यू कैन पुट इट इन योर रेज्यूमे। 50% प्रॉब्लम सॉल्व बिकॉज नाउ यू आर स्किल्ड एज पर योर न्यू डोमेन। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली हमने एक वर्किंग प्रोफेशनल की हेल्प की है जिन्होंने आईटी से, आईटी सेल्स से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में शिफ्ट किया है।
सो जब वो आईटी सेल्स कर रहे थे तो आईटी सेल्स में काफी इनफ एक्सपीरियंस हो गया था 5-6 साल का, बट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में शिफ्ट करने के लिए स्क्रम का सर्टिफिकेशन कर लिया, पीएमपी सीख लिया, एजाइल सीख लिया। ये सब मैं बता रहा हूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए ये सब रिक्वायर्ड है। स्किल सर्टिफिकेशन किया और कुछ नहीं किया। फिर क्या किया, जो पुराना एक्सपीरियंस है उसमें जो स्किल्स नए डोमेन्स के साथ रिलेवेंट है उसको थोड़ा सा हाईलाइट किया। तो एक्सपीरियंस पुराने में आईटी सेल्स के साथ साथ एक दो बुलेट पॉइंट्स ऐड कर दिए कि सेल्स के साथ साथ आई वाज आल्सो डूइंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आई वाज आल्सो हेल्पिंग क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशंस, कम्युनिकेशन, मैनेजिंग द टीम। कुछ किया होगा, देखा होगा होते हुए। सो इवन व्हेन ही सॉ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रॉम अ डिस्टेंस ही सेड दैट आई डिड इट इन माई पास्ट एक्सपीरियंस। सो अब क्या हो गया कि अब जो नए जॉब वाले, जो नया डोमेन है उसके लिए स्किल्स तो है ही, कुछ पास्ट एक्सपीरियंस भी रिलेवेंट हो जाता है। सो सडनली यू आर मोर रिलेवेंट टू द न्यू डोमेन शिफ्ट। अगेन प्रोजेक्ट्स, he did project management certifications as well as some live projects from Coursera for Edge. So experience में वो भी add हो गया. So now he becomes much more relevant and he got placed in the position of a scrum master. Correct, sir. Sir, one question was there that if I have worked in multiple companies in a very short period of time, like I have worked in 6 different companies in 6 years, so will it lead to rejection of the resume? Uh, Totally depends on the recruiter. So some recruiters do not consider this as a negative point, right? They would feel that okay, you look for growth all the time, but I don't think your resume will be rejected because of this. But you will be asked this question in the interview. अगर आपने resume सही बनाया है और आपने टारगेट रोल के हिसाब से स्किल्स दिखाई है तो आप शॉर्टलिस्ट तो हो जाओगे। बट इन द इंटरव्यू दे विल आस्क यू, यू हैव शिफ्टेड योर जॉब सो फ्रीक्वेंटली, व्हाई शुड वी हायर यू, यू विल कम हियर एंड यू विल लीव अगेन इन 1 ईयर। इसको आप कैसे जस्टिफाई करते हो, दैट विल डिसाइड वेदर यू विल बी हायर्ड और नॉट। एंड इसको जस्टिफाई करने के तरीके हैं, यू कैन से दैट you always look for exposure, you always look for learning and exploring, and till this time you were looking for a good role that you feel aligned towards, and this particular role looks like really aligned to your job, to your career aspirations, and that's why you want to be here for longer run। तरीका है जस्टिफाई करने का। if you could justify it in the interview, you can get selected। Correct, sir. There's a very specific query I have, if I'm able to find. Khushi has asked that I want HR jobs. So, what are the things a recruiter see in HR resume? What kind of skills do they notice? थोड़ा ब्रॉड क्वेश्चन है, बट देन Yes, एचआर इज अ वेरी ब्रॉड अम्ब्रेला डोमेन। correct, एचआर के अंदर रिक्रूटमेंट आता है, टैलेंट एंगेजमेंट आता है, कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स आता है, एंड डिफरेंट फील्ड्स, यू नो। अब नाउ व्हाट यू आइडियली हैव टू डू इज कि एचआर को ऊपर से पिक करने के बदले आप नीचे जो स्पेशलाइज स्किल सेट्स है, कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स है, टैलेंट एंगेजमेंट है, या लेट्स से टैलेंट एक्विजिशन है, आप इन मैन पावर प्लानिंग है, अगर आप इन सब पे जाओगे तो देन यू विल सी डिफरेंट काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन। फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट में बुलियन सर्च यूज होता है एज ए स्किल, राइट। कंपनसेशन बेनिफिट्स में एचआरएमएस के टूल्स यूज होते हैं अलग। तो यू विल हैव टू लर्न स्किल सेट्स टू प्रमोट योर सेल्फ एज एन एचआर पर्सन। अगर आपको अभी स्पेसिफिक नहीं जाना है, जनरलिस्ट एचआर भी रहना है, तो भी यू हैव टू लर्न मल्टीपल टूल्स फ्रॉम अक्रॉस डोमेन्स। अलग अलग जो सब स्पेशलाइजेशन है एचआर के, उसके आप मल्टीपल टूल्स यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे बोलूंगा उस लिस्ट से मच बेटर है दैट यू सर्च फॉर एचआर जॉब्स ऑन लिंक्डइन एंड लुक एट द जॉब डिस्क्रिप्शंस, व्हाट आर दे आस्किंग फॉर, एंड सी व्हाट यू वुड बी इंटरेस्टेड इन एंड कीप लर्निंग दैट। correct, sir, correct. Sir, Akshay Deshmukh has asked a question that can I show fake experience on my resume? I mean, I think I have covered this Yes, you in have the covered slide in. itself. Yes, sir. Yeah, my pick would be straight no. So there are different people who do different things, but I'll tell you why I am saying straight no. Because you can show it once. So there are people who have shown fake experience to get into a company, but then फिर उसके बाद फेक एक्सपीरियंस दिखा के शॉर्टलिस्ट हो गए, इंटरव्यू में पकड़ में आ गए, तो रिजेक्ट हो गए। लेट्स से इंटरव्यू में भी देयर इज अ वेरी स्मार्ट गाय हु जस्टिफाइज कि हाँ मैंने किया, और इंटरव्यू भी क्लियर हो गया बिकॉज कोई रेफरेंस था या कोई नोन पर्सन था। बट कंपनी के एचआर ने पूछा कि पीएफ की स्लिप्स दिखाओ, बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, जो सैलरी क्रेडिट होती थी, आस्क फॉर पे इन स्लिप्स, वहां पे फंस गए। उसके लिए फिर फेक सर्टिफिकेट के लिए फेक पे इन स्लिप्स बनाना है, फिर फेक पीएफ अकाउंट जो कि बन नहीं सकता,
उस कंपनी के बाद नेक्स्ट टाइम शिफ्ट करोगे, कई कंपनीज, लास्ट 3 कंपनीज का पे स्लिप्स और पीएफ अकाउंट में, देयर इज अ लॉट ऑफ लाइंग अराउंड दैट यू नीड टू डू. There is a difference between lying and exaggerating. I always prefer presenting yourself or overselling yourself in the resume. फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने 3 महीने कोई प्रोजेक्ट किया है तो मैं उसको 6 महीने बता देता हूँ. आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर द लास्ट इतना, 6 महीने मतलब डेट वाइज नहीं, that I have done so much work because I know the work, so I can oversell myself, right? But मैंने किया ही नहीं और मैं बोलूं कि मैंने किया है, that is a heavy risk that you are taking. So my answer would be no. Correct, sir. There is one very interesting question, sir. I was able to find that somebody has asked that what if a person has various skills from different genres? So how do they present this in a resume? Like a person could have a skill from data analytics, a person could have a skill from sales or some other genre which are not relatable. So how do they present this on the resume? You can present it very well, just that it won't be the most ideal presentation because you are Correct, confusing the recruiter. correct, Now, a lot of times when people apply through reference, which is a gone case today, क्या होता था पहले की कैंपस प्लेसमेंट्स बल्क में होती थी. इट्स नॉट हैपनिंग इवन एट आईआईटीज टुडे कि लोग आ रहे हैं और 200 लोगों को लेके चले जा रहे हैं, 300 लोगों को. तो उसमें क्या होता था, कंपनीज को मतलब नहीं होता था इनको क्या आता है. दे correct, वर जस्ट टेकिंग. सो जेनरिक रेज्यूमेस काम करते थे कि भाई सारी स्किल्स लिख दो. अभी कैसा हो गया, कंपनीज आर कमिंग, दे आर टेकिंग पीपल, बट दे आर टेकिंग पीपल फॉर स्पेशलाइज्ड स्किल सेट्स. तो अब अगर कंपनी आ रही है डेटा एनालिस्ट को ढूंढने और आप हो डेटा एनालिस्ट, लेकिन आप में आपकी बहुत सारी स्किल्स में वो कहीं छुपा हुआ है, तो एनीबडी correct, एल्स हु हाइलाइट्स डेटा एनालिस्ट एज ए स्किल सेट, ही विल बी प्रिफर्ड बिकॉज ही विल बी सिलेक्टेड. तो आप सारी स्किल्स मेंशन करो, बट हाईलाइट उन स्किल सेट्स को करो जिन जॉब रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, एंड देन बाकी को आप नीचे मेंशन करो. correct, sir. Sir, one problematic question is there. Vashasvi has asked that I have made my resume using ATS, but still my resume is not getting shortlisted. How to know the reason that why it is not getting shortlisted? Only two reasons. One, if the format is not ATS friendly. अगर format ATS friendly है, तो then for if the formatting is right, then the keywords are not matching. So you have not analyzed the JDs and included the right keywords. अगर ये दोनों प्रॉब्लम सॉर्टेड है और अगर आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा, तो आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो. इधर आप कीवर्ड सही से नहीं लिख रहे हो, ग्रामेटिकल एरर्स है या प्रूफ रीडिंग मिस्टेक्स है. बिकॉज इफ दीज 2-3 थिंग्स आर सॉर्टेड, अगर फॉर्मेट एटीएस फ्रेंडली है, if the keywords in the JDs you have included in your resume already and then you are applying, then it means कि या तो grammatical issue है या proof reading issue है, तभी shortlist नहीं हो रहा. else shortlist तो होगा, interview में selection rejection is a different matter. So you Correct, work on your resume कि आपने कीवर्ड सही से मेंशन किए हैं. correct. Sir, there is one more question. Person has asked that how do we are we allowed to insert hobbies section on our resume? If yes, then how? फ्रेशर्स आर अलाउड, ऐसा नहीं है कि अलाउड नहीं है, फ्रेशर्स लिख सकते हैं. बट जनरली हॉबीज की जगह हम लिखते हैं अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, बिकॉज हॉबीज आर इंपॉर्टेंट, नॉट लाइक दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट वो हॉबी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका कुछ रिजल्ट आए. मतलब instead Correct, of saying that I sing in my free time, I would say that I have played professional cricket at state level. तो प्रोफेशनल क्रिकेट एट स्टेट लेवल अवार्ड्स एंड अचीवमेंट जैसे बताया जा सकता है. तो जो correct. अवार्ड्स एंड अचीवमेंट वाला कॉलम है उसमें आप अपनी वो हॉबीज लिखो जिसका कुछ रिजल्ट आए, इसका कुछ आउटपुट निकला है. बाकी तो इंटरव्यू के लिए छोड़ सकते हो आप. That means if your hobbies are aligning with the JD, then we can always. Yes, Okay. some achievement, if they have Yes, led to yes. some achievement, that you can mention. Correct, correct, correct. Sir, can you recommend some platform where students can apply for job? Somebody has asked this question. So platforms as a standard, there are multiple platforms. So Naukri is one. अगर bulk jobs की बात करेंगे तो Naukri gives good results, and Foundit एक platform है. अभी Found. स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है अनस्टॉप, जो पहले डेयर टू compete था. नाउ इट्स अनस्टॉप. सो इनिशियली इट वाज जस्ट फॉर इवेंट्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स. नाउ दे आर आल्सो फैसिलिटेटिंग इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स, और वो सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, उसमें रैंडम लोग नहीं अप्लाई कर सकते. तो Okay. कॉलेज स्टूडेंट अगर आप हो तो आप अनस्टॉप पे रजिस्टर कर सकते हो. ग्रेट जॉब्स देयर, यू कैन ट्राई दैट आउट. बट बाई फार मुझे ऐसा लगता है जो गोल्ड माइन है अभी भी फॉर अप्लाइंग फॉर जॉब्स स्टिल लिंक्डइन. बिकॉज लिंक्डइन में एडवांटेज ये है कि जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, so the recruiters immediately gets to see your resume as well as your LinkedIn profile.
So for you to create a better impression, you have two chances. कि resume तो आपका अच्छा जो बना है वो बना ही है, उसके लिए अगर आप LinkedIn profile भी अच्छी से बनाते हो, if it is optimized, it is good. I mean, I will share my LinkedIn profile link with the students. They can check it so that they understand how a LinkedIn profile should be made. So if you make it in that format, then the recruiter can easily, get impressed. Third thing is, अप्लाई करने के बाद द ओनली प्लेटफॉर्म दैट गिव यू अ चांस टू कनेक्ट विद द रिक्रूटर इन सम मैनर इज लिंक्डइन. सो आप रिक्रूटर से, उस कंपनी के किसी प्रोफेशनल से कनेक्ट कर सकते हो. यू कैन जस्ट अप्रोच एंड से दैट आई वांट टू हैव अ कन्वर्सेशन अबाउट दिस जॉब रोल, वेदर आई एम सुटेबल और नॉट. अगर किसी ने रिप्लाई कर दिया, यू कैन गेट अ रेफरल. सो पर्सनल कनेक्ट का चांस सिर्फ लिंक्डइन देता है. सो बाय फार द गोल्ड माइन इज लिंक्डइन. डज नॉट मीन you will leave other platforms. Naukri Unstop also work really well, so you can opt for that. I will One just last question I would save like to take here, sir. this. I'm sorry. Yes. Yeah, some person have Yeah, asked yeah. that I am pursuing a particular degree, like students are pursuing MBA degree from LPU. So how do they represent this in their resume? As education. So if I would Ongoing have done an education. MBA, Yeah. ongoing education, yeah. Yes. So when you pursue a course, a PG course, then in your education you generally write 2022 to present, 2023 to present, because it's ongoing. So that is something that you can mention in your resume very well in education. But all the projects that you are mentioning, which you have done in during your MBA, they should be mentioned in the project and experience column. Correct, sir. Okay, sir, we can continue with the session. We can take Q&A after that also, because there are some other Sure, questions which are not linked with resume, but general job readiness and job searching. we So can we take. will take in the Sure, second session. Yeah, sure. We'll go to the concluding segment and then we'll correct, pick sir. Q&A again. Correct, sir. Before that, I'm just sharing my LinkedIn profile in the chat box. So I would ask all of you to stop commenting on the chat box for 30 seconds. I am sharing my LinkedIn profile. Everybody can go, send a connect request, hit the follow button. You will keep on receiving insights on LinkedIn. You will get a chance to see my profile later after this session. You can send a connect request to me as well. The benefit that you will get is, since we are not covering LinkedIn in this particular session, I keep on posting about how to create a good LinkedIn profile, good resume. You will keep getting more insights. So I've posted it in the chat box. You can just save it somewhere. Maybe you can just hit the follow button. You will keep receiving all the participants. I will just wait for 20 seconds and then I'll resume the session. Okay, so let me resume. So what we'll cover is one last slide about cover letters, as well as the final slide about how you can come among the top 1% of applicant, right? And this is where you will get all the concluding insights. Okay, are you ready? Should we start? Type ready in the chat box, please. I will share the link again towards the end of the session. My LinkedIn profile link towards the end of the session, I will share. Don't worry. Or you can just search for Satyam Khandelwal on LinkedIn. You will know. You will get the profile. Okay. What is a cover letter? Understand these two things. कब cover letter जरूरी रहता है?
if you're applying in the company's career page or through LinkedIn, through whatever, and they are just asking for resume, then you're not required to prepare a cover letter. Sometimes companies ask you to upload a cover letter separately, or they sometimes you're required to send your resume via mail. ये दो में से एक जब रिक्वायरमेंट रहती है, इधर अ कवर लेटर इज आस्क्ड सेपरेटली, स्पेसिफिकली दे आस्क कि कवर लेटर भी अपलोड करो, या फिर व्हेन यू आर सेंडिंग योर रेज्यूमे थ्रू मेल, तो आप मेल बॉडी में भी तो कुछ लिखोगे, दैट काउंट्स एज कवर लेटर ओनली. कैसे बनाना रहता है कवर लेटर? सबसे पहले रेज्यूमे पर्सनलाइज नहीं रहता, रेज्यूमे में आप किसी रिक्रूटर का नाम नहीं लिखते हो, बट अ कवर लेटर इज अ लेटर. तो कवर लेटर में लेटर है, लेटर इज ऑलवेज पर्सनलाइज, इट्स ऑलवेज एड्रेस्ड टू अ नेम, विच मीन्स कि आप जिसको मेल कर रहे हो उसकी मेल आईडी पता है तो उसका नाम भी पता होगा. और अगर आप कवर लेटर अपलोड कर रहे हो नाम नहीं पता है, तो इट्स ऑलवेज लाइक डियर रिक्रूटमेंट हेड, डियर वीपी टैलेंट एक्विजिशन, सम इट हैज टू बी एड्रेस टू अ पर्सन. अ कवर लेटर इज प्रिसाइजली 3 पैराग्राफ्स. इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो अगर कभी कवर लेटर बनाना पड़ा. अभी बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, बट जहां यूज होगा आपको ये 3 चीजों का ध्यान रखना है. प्रिसाइजली दीज 3 पैराग्राफ्स ओनली. नंबर 1, reference to the job showcasing your interest, which means, hi, I am writing this cover letter in reference to the job opening that was posted by you on LinkedIn, Naukri, wherever, and I think I will be a perfect fit for this role. I'm giving you an example, right? Number 2, second paragraph, show your experience and qualification and skills that matches the job requirement. I have been studying in, or I am a student of LPU, let's say for example, I'm a student of MBA program of LPU and I'm skilled in XYZ. I have done projects around ABC and I have an experience of working with XYZ. All of this should be aligned to job description. भाई जो जीडी में वो पूछ रहे हैं उसको आप लिख दो कि ये स्किल्स मेरे पास है, ये प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं, ये एक्सपीरियंस मेरे पास है. And then third paragraph, because of all this, because of the skill sets that I possess, I think I will be a perfect candidate for your for this role, because it also requires XYZ, because your role requires this and I have this, that is why I'm the perfect candidate. Then you can thank them. I thank you for considering my profile. I can be contacted at my phone number, email ID for any further interaction. Looking forward. This is the mail. But I'll make the task easy for you. Just take a screenshot. I've shortlisted 2 good cover letters for you. You can take a screenshot so that कभी आपको बनाना पड़ा तो आप ये फॉर्मेट कॉपी कर सकते हो. आई एम अज्यूमिंग कि आप एग्जैक्टली यही कवर लेटर कॉपी नहीं करोगे, बट दिस इज द फॉर्मेट. टेक a screenshot please and type SS in the chat box if you have taken the screenshot. Type SS in the chat box if you have taken the screenshot. Perfect. So this is about the cover letter. I think in less than 10% of the applications, you will be required to make a cover letter, because it's reducing. The use of cover letter is reducing. People are mostly asking directly to apply through LinkedIn, Naukri. They're not asking for cover letters. But if they ask, it's important you make it like really, really effective. Okay? Perfect. So before I give you the resume sample, like the resume template, a standard resume template, this is our final slide, right? The most popular or the most common query or issue or panic that I've seen among students or freshers or graduates is that सर सारी जॉब्स के लिए तो किसी के लिए 1000 एप्लीकेशंस है, किसी के लिए 5000 एप्लीकेशंस है, किसी के लिए 10,000 एप्लीकेशंस है, हमारा नंबर कब आएगा? मतलब रिक्रूटर कहाँ से हमें शॉर्टलिस्ट करेगा? ये इश्यू आता है आपके माइंड में? टाइप यस इन योर चैट बॉक्स. टाइप यस इफ दिस इज द प्रॉब्लम दैट यू थिंक इज देयर. तो मैं आपको बता देता हूं, एज अ रिक्रूटर व्हाट वी हैव एनालाइज्ड. अगर कोई जॉब है जिसमें 1000 एप्लीकेशंस है, एग्जांपल लेते हैं, कोई जॉब है जिसमें 1000 एप्लीकेशंस है, उसमें एवरेज जॉब में 500 से ज्यादा एप्लीकेशंस के जो रेज्यूमे हैं वो एटीएस फ्रेंडली नहीं होते. They just submit a resume with their pictures, with boxes, with
colors, फिर and ATS rejects it. So just by making an ATS friendly resume, you are among top 50% of candidates. Just by making an ATS friendly resume, please note this down. Which means out of 1,000 applicants, you are already among top 500. Already among top 500. अब फिर भी 500 है तो 500 से compete तो करना पड़ेगा. कैसे compete करेंगे? Only 20% of average applicants. Only 20% of average applicants are actually including the right keywords from the JD. अब मुझे नहीं पता कि ये आपको कितना टफ या इजी लग रहा है, पर अगर आप कुछ भी नहीं करो, सिंपल चैट जीपीटी ओपन करो. किसी ने आज तक चैट जीपीटी यूज किया है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स. टाइप मी इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव यूज्ड चैट जीपीटी. आई मेक ऑल माई स्टूडेंट्स रेज्यूमेस थ्रू चैट जीपीटी. एक बार तो हम खुद बनाते हैं, बट जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करना रहता है, व्हाट डू वी राइट? वी राइट, हाय, please analyze this job description and extract the keywords which I should include in my resume to increase my chances of shortlisting. Copy JD in inverted commas. JD को inverted commas में डाल देते हैं. Enter. Chat GPT lists down all the keywords. तो आपको पूरा JD पढ़ने की जरूरत नहीं है. अब एक तरीका है कि आप अपना रेज्यूमे देखो और चेक करो कितने कीवर्ड्स हैं या नहीं है, और इंक्लूड करो जहां जहां कर सकते हो, स्किल्स में, एक्सपीरियंस में. सपोज उतना टाइम भी नहीं वेस्ट करना है, देयर इज अनदर वे. हियर इज माई रेज्यूमे. सो पहला प्रॉम्प्ट क्या था? प्लीज एनालाइज द बिलो जॉब डिस्क्रिप्शन एंड एक्सट्रैक्ट द relevant keywords that I should include in my resume to get shortlisted for the job. This was the first prompt. Inverted comma start, JD, inverted commas close. डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर दिया. एंटर. वो पूरी लिस्ट दे देगा कीवर्ड्स की. एंड देन उसके बाद यू कैन इजीली मेंशन, हियर इज माय रेज्यूमे. कॉपी एंड पेस्ट योर रेज्यूमे फ्रॉम टॉप टू बॉटम. कॉपी एंड पेस्ट इट. प्लीज इंटीग्रेट द अबाउ कीवर्ड्स इन माय रेज्यूमे so that it looks effective. Enter. Chat GPT will integrate the keywords in the skill sets and experience section of your resume itself. बट इसके बाद आपको एक बार अपना रेज्यूमे अच्छे से देखना पड़ेगा, बिकॉज चैट जीपीटी को कई बार ये नहीं पता रहता कि सच बोलना है कि झूठ भी बोल सकते हैं. तो आप चेक करोगे, अगर कोई चीज आपने नहीं की है विच इज फेक, यू विल रिमूव इट. दैट इज हाउ यू विल इंड्यूस द राइट कीवर्ड्स. If you do it properly, you are already among top 20%, which means top 200 applications out of 1,000. And then when you move to result orientation, अभी किसी का क्वेश्चन आया था जो अर्पित आपने पूछा था कि क्यों नहीं शॉर्टलिस्ट हो रहा. हो सकता है फॉर्मेटिंग अच्छे से की हो सकता है कीवर्ड्स भी इंक्लूड कर लिए हो, बट क्या आपने पॉइंट्स को रिजल्ट ओरिएंटेशन वे में लिखा है? क्या आप सिर्फ ये बता रहे हो आई वर्कड ऑन एबीसी? आर यू ऑल्सो टेलिंग दैट आई वर्कड ऑन एबीसी विच रिजल्टेड इन दिस, विच हेल्प्ड दिस? राइट. सो दैट अगर आपने रिजल्ट ओरिएंटेड वे में पॉइंट्स लिखे हुए हैं, दैट टेक्स यू टू टॉप 10%. दैट मीन्स 1,000 में टॉप 100 पे आप आ जाओ. And if you have mentioned quantifiable metrics, which means I increased the FB traction by 30%, I increased the footfalls by 20%, I improved the customer engagement by X%, I made this project for my college and the faculty's feedback was 4.5 out of 5. Everything, every number you include in your projects and experience, you are among top 5%, which means 1,000 में से आप top 50 पे तो आ गए. जिसका मतलब है कि आपका रेज्यूमे एचआर के पास तो चला ही जाएगा. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड. नाउ हाउ यू बिकम टॉप 1%? Of course, not just by your resume. You'll have to go through your LinkedIn. You'll have to optimize your LinkedIn profile. You have to perform well in the interviews. And I'll give you both ways. LinkedIn का भी मैं आपको बता दूंगा और इंटरव्यूज का भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको कहाँ पे नॉलेज मिलेगी. डू यू वांट टू नो कि आप लिंक्डइन कहां से सीख सकते हो और आप इंटरव्यूज
की ट्रेनिंग कहां से ले सकते हो? डू यू वांट टू नो द नेम ऑफ द पोर्टल्स? टाइप यस इन द चैट बॉक्स. Okay. I'll be sharing two portals with you, right? Two channels with you that I run. One for understanding about LinkedIn. Second for every sample interview question. I have more than 200 interview questions in video format, right? I'll be sharing the link in the chat box. So you can stop commenting on chat box so that the link does not go away. I'll be sharing both the links. अगर वो क्लिक नहीं हो रही है तो उसको कॉपी करके सेव कर लो अपने ब्राउजर में. But I'm sharing it with you right now. Okay. Okay. So first I am going and sharing with you in the chat box the channel where you can learn everything about interviews. Okay. There are more than 200 sample interview questions. I'm posting it in the chat box. Just wait for a few minutes. I'll share everything. Just wait for a few minutes. Don't keep commenting. Otherwise the link will go away. Don't keep commenting. So here I have shared. This is a YouTube channel link where you have 200 plus questions. You can just go to this channel and just subscribe to the channel so that whenever you want to learn, you can just go and check out the videos. Okay, just check out the short videos. You will have everything. If you have if you hit the subscribe button already, type done in the chat box. You can type done in the chat box. Those who have gone to the channel and subscribe, type done in the chat box. Hit the subscribe button and type done. Okay. Everybody who has subscribed already, just type done. Next thing that I'm sharing with you is the LinkedIn thing. Everything that you need to learn about LinkedIn can be learned from here. So I'll just wait for people to confirm that they have got the YouTube channel and subscribe. Okay, thank you so much. Now you can stop commenting. Thank you so much. Now what I'll do is I'm sharing my LinkedIn link for all the LinkedIn learnings that you have, that you must have, right? I'm just sharing my LinkedIn link. You can stop commenting. So this is the LinkedIn link. You can go and hit the follow button here. You will receive all the insights of how to create a great profile on LinkedIn, plus some insights on resume and interviews as well. You can type done if you have already hit the follow button on this LinkedIn profile. Just type done there. And the next thing that I'm doing is I'm sharing sample resume templates with you. Okay. So that you can start drafting your own resume. So the resume templates that I'll share will have work experience resumes, freshers resumes, everything. Sample resumes. Okay. Okay. Here they are. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So I am sharing a link with you which will have 6 sample resumes. I repeat, 6 sample resumes. Okay. जो भी आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट कर रहा है, आपसे रिलेटेड है, आप वो टेम्पलेट डाउनलोड करो
और उस पर अपना बिल्ड करना चालू कर लो उसको एडिट करके. आई एम शेयरिंग द लिंक, जस्ट वेट, आई एम शेयरिंग द लिंक. दिस इज अ ड्राइव लिंक. ओके, दिस इज अ ड्राइव लिंक. इधर सेव इट और क्लिक इट. और जिसको दिख जाएगा उसके अंदर 6 रेज्यूमे टेम्पलेट जो बने हुए हैं, जस्ट टाइप सीन इन द चैट बॉक्स. जिसको उसके अंदर के टेम्पलेट्स दिख गए हैं, क्लिक करके यू कैन जस्ट टाइप सीन. आई विल ऑल्सो शेयर दीज लिंक्स विद अर्पित एंड योर कॉलेज अथॉरिटीज. जिसको नहीं मिला, यू कैन मेल ऑन द रिलेवेंट मेल आईडी. They will share it with you. Don't worry. They will share it with you. Perfect. So that's it from my side. We can have a second round, a concluding round of Q&A, Arpit, if you are there, and then we can conclude the session. Maybe we can have a couple of questions that could be answered. Arpit, are you there? Yes, yes, Satyam. So that's it about the content of the session. We can like take a few more questions if that's okay, and then we can Uh, conclude. yes, sir. I was able to write down one more question a student Okay, has okay, asked. sure. Somebody has asked that if a JD has a list of skill set which is required, but a candidate have only a few of them, then how to manage such kind of situation? I mean, learn. That's the only way to manage the That, obviously, situation. Yeah, learn the skill sets because there is no other way out. If they are looking for 3 skill sets, 4 skill sets, and you have one, I'm sure other applicants will have more. Now, how to learn is also an interesting question. Again, there are layers to learning. For example, if I want to learn Power BI, then and I know nothing about Power BI, then first of all, I'll go to free YouTube videos. I'll understand the basics. Then I'll move to Coursera, possibly. And then Coursera say I will learn and I'll also do guided projects. There are free guided projects in Coursera. So what will happen? I will learn Power BI and also I'll implement Power BI and I will do some projects in Power BI. So in resume, I'll just not write Power BI. correct. Skills mein to I'll write Power BI, but in projects, I will mention a project that I did with the use of Power BI. So that is how you learn skill sets. If you can learn 2, 3 skill sets this way, your profile would be highlighted. Satyam, a personal question from my side also. Is it okay to mention the proficiency on a particular skill set, like a basic proficiency or a moderate proficiency? Uh, is it okay? It's okay. Like, I mean, there is nothing against mentioning the proficiency, but then it does not work that well in resume these days because recruiters are looking for implementable knowledge. Correct. Once you write basic or advanced or expert level proficiency, it does not mean anything till the time you are mentioning the projects that you have done using that tool. So instead Correct. of using those words, it's much more advisable to use the projects. Mention the projects that you have done. They will evaluate whether it's a basic skill or an advanced level or a proficient level Correct, skill. correct, sir, correct. And one more question I got is how important are the communication skills in every kind of profile, and how do we include in the resume or or cover letter? Yeah, so in resume or cover letter, राइट कम्युनिकेशन, 2 चीजें कम्युनिकेशन स्किल के बारे में. एक तो ये शायद सबसे कॉमन स्किल है जो 99% रेज्यूमे में दिख जाएगी कि कम्युनिकेशन स्किल्स या गुड कम्युनिकेशन स्किल्स या एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल. तो इसका मतलब ये भी है कि इसका कोई खास मीनिंग रह नहीं गया है अब रेज्यूमे में लिखने का. बट अगेन, इन योर प्रोजेक्ट सेक्शन, अगर आपने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स मेंशन करके रखे हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव कंडक्टेड वेबिनार्स, इफ यू हैव डन सम क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशंस, इफ यू हैव ऑर्गेनाइज्ड इवेंट्स, तो नॉट डायरेक्टली बट पैसिवली यू आर टेलिंग द रिक्रूटर दैट यू आर अ गुड कम्युनिकेटर. और स्किल्स पे कम्युनिकेशन स्किल्स लिखने के बदले पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, दीज स्किल्स आर बॉट मोर. तो इन स्किल्स का इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा पड़ेगा. ऑल दीज आर रिलेटेड टू कम्युनिकेशन ओनली, बट ये जेनेरिक नहीं है, ये स्पेसिफिक है. और जब आप ऐसे लिखेंगे और प्रोजेक्ट्स में भी मेंशन करेंगे तो रिक्रूटर को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा. करेक्ट. सो अपने बुलेटेड पॉइंट्स में कुछ इस तरह से इसको इंक्लूड कर लें.
मेंशन करना है कि आपने करेक्ट इंप्लीमेंट कहाँ करेक्ट करेक्ट किया सर। है। बिकॉज आई, अगर मैं क्लेम करता हूं दैट आई एम अ गुड कोच, अगेंस्ट दैट मैं अगर लिख के बताता हूं कि आई कोच दीज मेनी पीपल एंड दे हैव गॉट दीज मेनी जॉब्स, तो मुझे क्लेम करने की जरूरत ही नहीं, मेरे प्रोजेक्ट में ही दिख रहा है। करेक्ट, तो आपका थ्रू रिजल्ट प्रोजेक्ट्स ओरिएंटेशन एंड होएगा। बुलेट पॉइंट्स। करेक्ट सर। एग्जैक्टली। Correct, sir. So one more question is there that should we include the career gap that what we have done during the career gap, like government job preparation or something like that? यस, सो यू कैनॉट लाई अबाउट योर करियर गैप एंड दैट इज वाई, छुपाने का तो सेंस ही नहीं है। अब जब Correct. अपना रेज्यूमे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाते हैं, तो आपने जब एजुकेशन कंप्लीट की, लेट्स से वो टाइम था 2021, एंड देन 1 से लेकर 24 तक आपका करियर गैप है, तो आपने 21 से 24 आप गायब नहीं कर सकते, आपको कुछ लिखना पड़ेगा। सो लेट्स से फ्रॉम अप्रैल 2021 टू December 2023, mention skills that you have learned, mention some subjects, if you have done some teaching, mention that, if you learned some, skills by experience, some voluntary projects that you have done, अगर ये सब किया है तो आप उसको लिखिए, और अगर नहीं किया है तो आपको लिखना पड़ेगा प्रिपेयर्ड फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस वेयर यू कुड स्कोर वेल इन 2-3 सब्जेक्ट्स। वो तो जो अच्छे सब्जेक्ट्स जो स्कोर आपने किए हैं वो आप लिख दो वहां पे, राइट। बट माई ओनली एडवाइस इज कि अगर आपकी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चल रही थी, तो इमीडिएटली जंप मत कीजिए अप्लाई करने के लिए। अगर आप इमीडिएटली जंप करेंगे अप्लाई करने में, तो रिसेंट लेटेस्ट क्या दिखेगा, गैप। स्टार्ट अपस्किलिंग, अंडरस्टैंड कहाँ आपको जाना है, कुछ अपस्किलिंग कीजिए। लेट्स से कि अगर आप अभी अपस्किलिंग करना चालू करते हो, नेक्स्ट 2-3 महीने में कुछ स्किल सीख सकते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, और वो मेंशन कर सकते हैं रेज्यूमे में। तो जो लेटेस्ट चीज है वो गैप नहीं रहेगा। दैट वुड Correct. बी समथिंग अराउंड द स्किल्स, द प्रोजेक्ट्स, दैट विल पुश योर रेज्यूमे। Initially build a volume of skills before applying after the career gap, करेक्ट, right? करेक्ट। Right, sir. Sir, one more question is, I started my career as a sales executive and right now I'm working for last 3 years in cloud computing domain. I want to shift my domain to data analyst. What could be the best way for me to do the same? So cloud computing domain में you were already there. So first thing first, I would ask you to analyze the job description of data analyst roles that you want to apply for. बहुत सारे data analyst role है, आपको किस इंडस्ट्री में अप्लाई करना है, किस कंपनी में करना है, वो आप सिलेक्ट कीजिए, उनके जेडीज को एनालाइज कीजिए, देन सी व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स आर दे डिमांडिंग, लर्न दोज स्किल सेट्स, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लर्न द स्किल सेट्स, डू सम प्रोजेक्ट्स। नाउ व्हेन यू रिबिल्ड योर रेज्यूमे, तो जो आपका पास क्लाउड कंप्यूटिंग का एक्सपीरियंस है, सपोज कि उस एक्सपीरियंस में 6 या 7 बुलेट पॉइंट्स है, उसमें 2 या 3 बुलेट पॉइंट्स में डेटा एनालिस्ट बना दीजिए। इनफैक्ट आई हैव ऑल्सो एडवाइज पीपल टू चेंज देयर डेजिग्नेशन एज क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सपर्ट एंड डेटा एनालिस्ट इवन इन देयर पास जॉब, बिकॉज यू नीड टू शोकेस दैट इवन इन योर पास जॉब आप क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सपर्ट जैसे आपने ज्वाइन किया था, बट यू स्टार्टेड गेटिंग एक्सपोज टू डेटा एनालिसिस एज वेल। ये क्यों किया जाता है, ताकि रिक्रूटर को ये ना लगे कि आप बिल्कुल न्यूबी हो डेटा एनालिस्ट। So you have been exposed to data analysis in your past role as well. You joined as cloud computing expert, but you were exposed to data analysis roles. और आपने कुछ roles उस समय किए हुए हैं, and then you upskilled yourself in data analyst tools and skills. Then you did some project in data analysis. Now you are looking for a full-time data analyst. Right. So thank you for answering this question, sir. One last question I would like to take. Arpita has asked this question that can you recommend some free certification websites for people from HR background so that they can learn and add the same in their resume as a Yeah, fresher? yeah, yeah. On Google, search for Coursera guided projects in HR. कॉर्सेरा के अंदर गाइडेड प्रोजेक्ट्स का एक टैब है, उसके अंदर मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर सारे बाइफरकेशंस है। सो कॉर्सेरा गाइडेड प्रोजेक्ट्स इन एचआर आप सर्च करो, यू विल गेट अ लॉट ऑफ सर्टिफिकेशन विद प्रोजेक्ट्स इन एचआर। एंड देन द अदर वेबसाइट इज simulationstheforage.com, as Yes. I told Yes. you. It gives virtual Correct. certifications on all domains including HR. One last question. I also get one more question. Okay, we'll take one more. We'll take Okay. one more. I'm looking for a management job and I have three different field of experience, but all are associate level and recently completed MBA from LPU. What will be the requirement to apply for a management job in any of these fields? ओके, अगेन थोड़ा जेनेरिक है, कंफ्यूजिंग है कि Yes. वो 3 फील्ड्स कौन सी हैं और Correct. आप का उसमें रोल क्या रहा है। बट फॉर एनी काइंड ऑफ मैनेजमेंट रोल दैट यू वांट टू अप्लाई फॉर, if it is marketing, finance, HR, anything, you will have to showcase your experience of the past and show that you have led a team, you have actually managed a team.
तो मैनेजमेंट जॉब किसको मिलेगी? जिसने लोगों के साथ काम करे। मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है? द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. So if you Correct. can show in your resume that you have worked and managed a team in whatever you have done, and then you are pitching yourself for that role, your chances would be higher. Correct. Thank you, Satyam. I would Oh, like to perfect. thank you for steering the victim mindset to progressive mindset and bursting the myths of job readiness. I'm sure the participants are going to harvest maximum from this today's session, sir. I would also like to thank all the energetic participants to make this session a success. I'm thankful to university management and our HOW, Ms. Kinni Nijavan ma'am, for supporting us to organize such sessions. And finally, a big thanks to the team who are working behind the walls to organize these sessions. Thank you, guys. Have a wonderful day. Thank you. Thank you so much, Arpit, for the invite. I hope the session was useful. All the best to everybody. Let's stay connected. Thank you so much. Okay, sir. Bye bye.